Well, the Modi-Yogi double engine is chugging towards the dream of Ram Rajya, it seems. Already, Ram Lala is Virajman in Ayodhya. Now, Lakshman starring statue watches over its capital city, Lucknow. Powered by Vikas and Astha, today the UP state dreams of a $1 trillion economy in 5 years. The Prime Minister and Chief Minister fueled this speed to build an Uttam Pradesh, which the BJP says reflects not just the aspirations of the state's youth, but also draws from its glorious cultural heritage. धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते मैं आपको भरोसा देता हूं कि उत्तर प्रदेश की आज की सरकार, उत्तर प्रदेश की आज की ब्यूरोक्रेसी प्रगति के राह पर दृढ़ संकल्प होकर के चल पड़ी है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है। With Modi-Yogi double engine being hailed by industrialists who poured into the investor summit in Lucknow, many hailed this model as being Yogi for the state. Others hailed the land of Astha. Listen in to Mukesh Ambani referring to Lucknow as Lakshman ki Nagri. लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। However, the opposition has been left unimpressed. The quest for Ram Rajya is being linked to saffronization, and even the investment summit is being questioned as nothing more than tokenism. ये नाम बदलना और इसको भी सियासत करना, ये हम समझते हैं कि ये सियासत का अच्छा स्तर नहीं है। ये लखनऊ किसके नाम पे था ये आपको मालूम है? नाम बदलने से क्या मिल रहा है? आपने अल्लाह के नाम के ऊपर इलाहाबाद का नाम था, और मैं समझता हूं अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क तो होता नहीं। थीम देखिए अंदर क्या है। इतनी सियासत को इस स्तर पे लेके जाना देश के लिए अच्छी बात नहीं। Yeah, this is the development of Bharatiya Janata Party. They have changed the name of Mughal Gardens very recently, and everywhere they are going to change name of roads, towns. This is the habit of Bharatiya Janata Party, and I strongly condemn it. All right, let's take this across to Sharad Trivedi, spokesperson of the BJP in Uttar Pradesh, Rami Desai, who is a political analyst as well as an author. We are also joined by Advocate Talha Rashadi, spokesperson of Rashtriya Ulama Council. But my first question is to IP Singh, spokesperson of Samajwadi Party. Ram Mandir bhi aa gaya aur रुपए भी आ गए, IP Singh जी। कागजों पर तो रुपए आ गए, और राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन गुजरात में पिछले 2 दशक में एक वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ, और गुजरात वाइब्रेंट गुजरात बढ़ते बढ़ते वो इन्वेस्टर समिट होने लगी। जहां भी बीजेपी की सरकारें इन्वेस्टर समिट हो रही है, देश में तो कोई निवेश आ नहीं रहा है। मैंने अमेरिका की 4 बार यात्रा करी है, यूरोप की अनेकों बार यात्रा करी है। 22,000-30,000 किलोमीटर दूर से कौन भारत में निवेश करने आता है? मैं शिकागो से अभी मेडिसन जा रहा था, और मेडिसन लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है। मैंने देखा कि उस एक्सप्रेसवे जो 40-50 साल पुराना था, उसके दोनों तरफ शानदार इंडस्ट्री लगी हुई थी। लेकिन देखिए, विडंबना देखिए उत्तर प्रदेश की और देश की, कि देश की राजधानी दिल्ली से लखनऊ को जोड़ते हैं और लखनऊ बिहार बॉर्डर को जोड़ता है। एक्सप्रेसवे हैं। क्या पिछले 9 वर्षों में कोई इंडस्ट्री यहां आई?
सिर्फ बहुत अच्छी बात फोटोबाजी कही है, आपने सर, बट भाषणबाजी ये है, बताइए, ये मीडियाबाजी मेडिसिन है। से शिकागो की यात्रा जो आपने की है, आपकी तो सरकार कम से कम 3-4 बार रही है, ये कभी यात्रा आपने पहले की है? और एक्सप्रेसवे बना के उसके बगल में इंडस्ट्री शायद खोली है? आगरा आज देश में एक्सप्रेसवे की बात क्यों प्रारंभ हुई? जब माननीय अखिलेश जी ने लखनऊ से लेकर आगरा तक एक शानदार एक्सप्रेसवे बनाया। सर, आगरा एक्सप्रेसवे कब बना? दुनिया में और इस आपकी तरह की पहली सड़क नहीं सरकार है। मुलायम जी की कब बनी थी? किस साल में बनी थी? आप देखिए ना, जहां भी ये इन्वेस्टर समिट हो रही है, सब के सब समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ है। विभूति खंड में हुआ वो नेताजी ने बनाया था। आज जहां कार्यक्रम हो रहा है वो माननीय अखिलेश जी ने बनाया है। विभूति खंड क्यों? पूरा का पूरा लखनऊ आपने बनाया है स्टैचू लगाने के अलावा। ये सरकार, सुन लीजिए ना, बात तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मैं बाइनोकुलर मंगाया हूं, दूरबीन मंगाया, उससे आप सबको दिखाना चाहता कि उत्तर प्रदेश में कौन सा निवेश आ रहा है। सर, इतनी हवा साफ हो गई है लखनऊ की कि आप लखनऊ में बैठ करके 75 जिलों को बाइनोकुलर से देख पा रहे हैं। ये भी एक अलग ही उपलब्धि है। हम दिखाना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि देवरिया में कौन सा निवेश आया, बलिया में कौन सा आया। प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी के ठीक बगल में मात्र 30 किलोमीटर पर चंदौली है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, आजमगढ़ है। एक एक करके पूछते हैं, आपने सही जवाब। बिल्कुल आपको अकाउंटेबिलिटी सीख करनी चाहिए। रायबरेली से अकाउंटेबिलिटी आपको सीख करनी चाहिए। आखिरकार आपने आगरा एक्सप्रेसवे जो बनाया है, बताइए शरद त्रिवेदी जी, बलिया, देवरिया, क्या किया आपने उनके लिए? You see that we got Uttar Pradesh when it was at its absolutely rock bottom. It was in the abyss. Nobody wanted to come to Uttar Pradesh. Forget about investing in Uttar Pradesh. It was top in crime. It had no infrastructure. It had no electricity. People were not even eminently qualified to take up the jobs because they did not have the skills for it. First thing that we had to do was to create the environment for investment. That is what we came about. Now Uttar Pradesh is 23rd in crime in the entire country. The national average is 256 crimes per 1 lakh. Today it is 152 per lakh. That is the level of development that has happened in Uttar Pradesh in crime. We had not one attempt or even attempt of terror has happened in Uttar Pradesh. That was the first thing we had to do. The second thing we had to do was to create the infrastructure. We created 6 expressways. We created मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट को ही बता रहा हूँ। और अभी बलिया में एक व्यापारी ने वहां नहीं, आपने उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं दी थी। आपने क्योंकि ठेके चाहिए थे तो आपने वहां पे खाली एक प्लांट लगा दिया। आपने किसी को बिजली नहीं दी थी। अरे भाई, वो बिजली का यही तो पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने 1 यूनिट बिजली उत्पादन के लिए क्या उत्तर प्रदेश में कुछ किया? क्या योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने 6 वर्ष हो गया 1 यूनिट बिजली उत्पादन प्रदेश में हमने हर घर में बिजली पहुंचा दी है। बिजली नहीं आती, हर घर में बिजली उत्तर प्रदेश में पहुंचा दी है। नहीं आती, मैनपुर में बिजली नहीं कोई भी गांव उत्तर प्रदेश में, कोई घर उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती, अलीगढ़ में बिजली नहीं आती। आप बताइए ना। अच्छा, थोड़े आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि आपने बलिया और देवरिया का नाम लिया है। आईपी सिंह जी, यू नो, ये एक सेकंड टीवी पे आके फिर हम नॉन स्टॉप चीजें बोलते रहेंगे। आपने इसके लिए क्या किया, उसके लिए क्या किया, फिर हम 75 जिलों की आपको लिस्ट देते रहेंगे। बट सिर्फ बलिया का आउट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मैं आपको बता देती हूं कि आपने 2 नाम लिए हैं। बलिया में 200 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य दिया गया है और उसमें 182 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और एमएसएमई 107 करोड़ के नए प्रस्ताव सिर्फ बलिया के लिए प्राप्त हो चुके हैं। और ये 2022 के आंकड़े हैं, 2022 के आंकड़े हैं। अमेठी में सर, अमेठी में एके की जो फैक्ट्री खुली है, जो कलाशनिकोव राइफल्स की फैक्ट्री खुली है, उसमें प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ये तो आपको भी पता है। पूछ रहे किस जिले में शुरू हुआ? अरे सर, अमेठी जिले में अभी तक कौन सी पैसों की बौछार हो रही थी? कौन सा धन कुबेर वहां पे बैठे हुए थे? पहले उस इंडस्ट्री को दिखाना चाहिए था, उस उद्योग को दिखाना चाहिए था। एक लुलू माल आया, उस पर यह सरकार
फुल विज्ञापन दिया अखबारों में। वो लुलु मॉल समाजवादी पार्टी के समय शुरू हुआ। अच्छी बात है ना, आप तो चलिए लुलु मॉल के बहाने ही सही, कम से कम आपने ये तो माना कि मुस्लिम उद्योगपतियों को वहां पर निवेश का मौका दिया जा रहा है। चलिए ये तो मान लिया आपने। बनवाया JPNIC जयप्रकाश नारायण केंद्र, जो देश का सबसे बढ़िया बिल्डिंग है, वो समाजवादी पार्टी ने बनवाया। सर मेट्रो समाजवादी पार्टी ने बनवाई। सर लुलु मॉल का भी कहीं जो भूमि पूजन था वो कहीं समाजवादी पार्टी ने तो नहीं करवाया था 15-20 साल पहले। कहाँ क्या बात करती है, हम यही हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, सभी आपने कुछ बनवाया, सबकी शुरुआत आपने की थी, आपने आगाज किया था, अंजाम भी कर देते तो बहुत अच्छी बात होती। बट let me get in Rami please get in Rami Desai as well. Rami Desai, here's the thing. Here is the thing that most people cannot seem to square off. They are saying that, you know, on the one hand you're talking about a global investor summit, on the other hand one day before it you are talking about renaming Lucknow into Lakshmanpur. This modernity and this backwardness doesn't seem to square off. Good evening, Padmaja. First of all, I don't understand why should renaming renaming a city again be considered backward. However, you know, what I don't really understand is what all this hullabaloo is about within the opposition about this name change. I understand that their job is to constantly create a hostile environment, but you know, such random issues to do it on is really unnecessary. The fact of the matter is the name change is a non-issue. We don't even know if it will happen. But what is really riling them up is not this. What is really riling them up is that, you know, the Chief Minister has again, you know, done something that they wish that they should have thought of doing, whether it's unveiling a statue of Lord Lakshman, you know, which has further tapped into people's sentiments, which unfortunately the SP or any other opposition in their years in power took for granted and didn't think of doing. Now, this global investor summit, as I've just heard, you know, seems to be the other thing that's really riling them up. Instead of, like, you know, having some sort of positive opposition, which I really don't think we can really expect, but instead of that, you know, there's all this negativity and this sort of, you know, this sort of focus to that they want to divert, you know. The Global Investors Summit has had a stellar participant list that, you know, has encouraged the state to set a target that's higher from what they had previously thought. It's almost 7.5 lakh crore higher from previously expected. You know, just to prep for this summit, they've gone throughout the country doing road shows. They've done, you know, they've done summits down to the divisional level. They've spruced the city up. You know, all this has really riled up the opposition, and therefore they are crying wolf where there's none to be seen. Talha Rashadi, essentially there was this stereotype of Uttar Pradesh as backward, some Hindu majoritarian, only care about cow and temple. But now they have been proven wrong, so there is consternation. Talha Rashadi. It's the BJP and the people belonging to the BJP's ideology who are creating this perception of Uttar Pradesh. It's not the people of the Uttar Pradesh or the other political parties of Uttar Pradesh. It's the BJP itself which is responsible for the stereotyping of Uttar Pradesh. So you should ask this question to the BJP spokesperson. Now the other thing is that if they are, you know, so much dedicated to the vikas of Uttar Pradesh, to the development of the Uttar Pradesh, there are certain questions. There have been various investor summits that have been taking place in Uttar Pradesh. There was an investor summit last year, then there was another investor summit 2 years back, and so on. But what was the result? Is there any implementation of all the investment on the ground? What is the ground reality? Do they do accountability before organizing a new investor summit? We are seeing a lot of, you know, hue and cry and a lot of this excitement, the sponsored excitement of the government, the advertisement and the halla gulla all around the media and the posters and the hoardings around the Lucknow and throughout the UP that there's a huge investor summit being organized in Rami Desai will respond to that. What happened to Investor Summit 2022, 2021? Padmaja, let me complete. Okay, please complete. I'm simply asking a question. What was the result of all the ghoshanas that were made that this amount of
I was asking your question only, sir. Rami Desai, what came of the past announcements? Rami Desai. You know, I don't understand. I mean, these are people who are asking this question who themselves have never held themselves to any accountability whatsoever. I mean, this is a time and age that UP has never seen before, that so many people are willing to come here and investors are willing to come. You know, I'm sorry, 18,000 MOUs have been signed. Reliance has already announced that 75,000 crores, more than the 50,000 crores that they've already invested, they are going to invest, which is almost going to create 1 lakh jobs. 5 new airports are going to come up in UP. That's going to make it first of its type in the entire country. And I find it really audacious for you to ask, where is UP going or what are they doing? I mean, you know, these are really generic statements, and, you know, if you want to point a finger, you can endlessly point a finger. But, you know, the fact of the matter is that the impression of UP has changed, you know. The fact is that this government had to remove mafias, and why were there mafias? Why were the kind of, why did the state have the kind of, you know, reputation that it did? Because the previous governments didn't care. So I don't think any representative of the previous governments should be really asking these questions or asking for accountability. Of course, you know, because they are in the opposition, they have the right to. But I don't think you have a moral footing to stand on. Okay, can you answer that, Mr. Trivedi? What has come of your past announcements, because nobody is convinced about your claims? Well, you see, when the last investors summit happened, we did not get the virus to India and we did not attack Ukraine. At that time, we could not expect the people who had committed the investment in Uttar Pradesh would have brought the investment actually, because we were shutting down the system at that time. There was no way that people could have come to invest in Uttar Pradesh. Today, the chairman of the Hiran Andani group, I'm not talking about the government or the party, I'm talking about the chairman of Hiran Andani group, one of the biggest business houses in India. He has said that the first time we have found that Uttar Pradesh has got the conducive atmosphere for investment. They have got the right control on the crime. The organized crime does not exist. Now the people are going to come to invest. We have had commitments of more than 17 lakh crores. The target was only 10 lakh crores. We have got 17 lakh crore commitments. We have had every conceivable group in Delhi. Reliance is there, the Tata group is there, the Adani group is there, Ambani group is there. Every group is coming to invest in Uttar Pradesh. The problem with the opposition is that they don't want to accept Uttar Pradesh as a developed state. They continue to maintain Uttar Pradesh at the rock bottom. Uttar Pradesh was just supplying the raw material for the investment in other states. We were only providing the labor. Employee provident, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आ रहा है इन्वेस्टमेंट. समाचारों में अच्छी बातें. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में दुगना रजिस्ट्रेशन हुआ है, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होता है जिनको नौकरी मिलती है. सर, इसका कितना प्रोविडेंट फंड का कितना बड़ा जो सवाल हुआ, आपको भी पता है कितना 1000 करोड़ चला गया. सवाल हमने सर ये बताइए ना, नौकरी का आप बताइए. तो टिकट देखिए, आप कह रहे हैं 1 लाख नौकरी आई थी, अजीब मैडम कह रही थी 1 लाख नौकरी आई थी. पिछले 5 सालों में जो इन्वेस्टमेंट आया, कितनी नौकरी आई, कितने नौजवानों को उत्तर प्रदेश की नौकरी मिली? आप विकास की बात, हमने किसी भी फोरम में न माननीय प्रधानमंत्री जी ने, न माननीय मुख्यमंत्री जी ने, या किसी बूथ अध्यक्ष ने यह बात कही थी कि हम सरकारी नौकरी देंगे. सरकारी नौकरी देने का कोई वायदा नहीं किया था. हमने कहा था हम नौकरी देंगे, और नौकरी हमने दी है उत्तर प्रदेश में. Okay, there are high expectations, and it's good that there should be higher expectation of what has already been achieved. Deliverables, timelines are all being sought at present. But Rami Desai, final word, it's interesting that this kind of model, you know, the kind of, for example, you see Mr. Modi and Mr. Yogi together during the Bhumi Pujan of Ram Mandir. Then together they can also occupy. प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी का एक बार नाम नहीं लिया, और मुख्यमंत्री जी को शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन रोड शो करने जाना था. भारत सरकार ने परमिशन नहीं दिया. उत्तर प्रदेश में डीजीपी एडहॉक है,
जो चीफ सेक्रेटरी है वो रिटायर हो चुके हैं 1.5 साल पहले। तो यहां ना ब्यूरोक्रेसी में काम है, ना नेताओं में एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। मुख्यमंत्री को नीचा दिखाना है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना है, मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा में बाधा उत्पन्न करके उन्हें विदेश नहीं जाने दिया गया, उनका रोड शो नहीं होने दिया गया। और आज भी प्रधानमंत्री जी जब आए तो उनका नाम तक नहीं लिया। बहुत खराब बात है। काउंटर्स बनाए थे, उधर प्रधानमंत्री जी गए ही नहीं, देखा ही नहीं। जी IP सिंह जी, बिल्कुल ये संदेश होगा, ये बिल्कुल एक संदेश होगा योगी जी के लिए। बट डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ मैसेजिंग रमी देसाई इज डिलिबरेट? What sort of messaging are we talking about, Padmaja? Is what he's indicating towards the fact that the entire cabinet showed up, the fact that even when No, that's not the messaging I was talking about. I'm talking about the messaging that you have the Prime Minister and the Chief Minister at the same time. 2 years ago at the Ram Mandir Bhumi Pujan, then the Prime Minister, the Chief Minister, today at the Investor Summit, Mr. Modi saying कि योगी है OP योगी उत्तर प्रदेश के लिए. Is this a deliberate messaging to say that both of these things can coexist in the state? But of course, both of these things can not just only exist in the state, but they can exist across the country. I think, we are a very unique country. We have a civilization that is unique, unlike any other country in the world. And, economy, development, progress, it's not hindered by our civilizational past. So, of course, this can go hand in hand. And there's nothing backward about it or regressive about it. And people who think so are only thinking so to divert the attention from all the good things that are happening, to communalize and, to really take the focus off development and to really bring disrepute to the work that is being done. This is not really, sometimes you have to rise above politics and, do what is really beneficial for your state or for your country, which the opposition keeps forgetting time and again. I think they need to take off their communal lens and, call a spade and look at what, what is happening to their state, which unfortunately under them was not happening. And the simplest thing to remember is that if you've got a Ram Mandir being built in Ayodhya, at the same time, the city is also getting an airport. That is how the two things coexist. And that's what India is about. Thanks very much, all gentlemen, Rami Desai, for joining me. That's it then from me. I'll see you next at 10 on the News Hour Agenda.